Hello children. Now in this video we will take the third law of inheritance, that is the third law of Mendel, and it is law of independent assortment. So how we define this law? In a dihybrid cross, the two factors or genes. I told you, once again I'm telling you, that the term gene was taken by Johansen, whereas Mendel used the term factors for genes. So whether you write gene or factor, it is the same thing. In a dihybrid cross, that means we are taking two characters. The two genes of each character, they separate and get randomly rearranged at the time of gamete formation and produce both parental and new combinations, that is recombinations of the traits in the offsprings. You can also define it maybe a little simpler form, whatever you find convenient. See, there are some technical terms, so that should be present in the definition, and yes, it is very important to learn these laws because they are asked in the paper to mention. So there's another definition. You can write it in this way also. It states that factors or genes controlling different characters assort independently without influencing each other during the formation of gamete. If you remember, in the previous law, that was law of segregation, I told you that two genes which were controlling one character, है ना, they separate or segregate without blending, mixing each other during the formation of gamete, so that each one receives the gene for each character. So that was for one character, and here it is for different characters. So genes which are controlling different characters, they assort independently without influencing, without affecting each other, without mixing with each other, and this takes place at the time of gamete formation. Now we will see the examples. First example over here is a dihybrid cross is taken between a plant with a yellow cotyledon and round seed coat. So these two are the dominant characters which are taken, and another plant having green cotyledon and wrinkled seed coat. So the combination is green cotyledon with the yellow cotyledon with the green. So yellow is dominant, green is recessive, and round seed coat with the wrinkled seed coat. So round is dominant over wrinkled seed coat. So here we see there are two characters which we are taking in consideration. I hope you remember, character means two features which we are taking. So one is the type of cotyledon, other is seed coat. So round and yellow, wrinkled and green. Round, wrinkled, yellow, green. These are the types. Now we see these are the parents, and we see the gametes of these. So it will be round will be represented by capital R because it is dominant, and the recessive will be represented by small r, and here yellow will be capital Y, green will be small y. Now when the gamete formation will take place, one from round, one from yellow. So capital R, capital Y, and this side again capital R, capital Y, because we have 4 here. And here also capital R, small r, small y, small r, small y. These are the gametes which are of the parents which are there for the cross. Now when the cross is made, what do we get in the F1 generation? If you remember, according to law of dominance, all the dominant characters will be present in their heterozygous condition. तो अगर हम सिर्फ रेड एंड येलो round and wrinkled, if we see, so round is dominant over wrinkled, and heterozygous condition में it will come as capital R, small r. Yellow or green में capital Y, small y. So that is the condition of being heterozygous. So the result of F1 generation of phenotype is all round and yellow, and genotype will be capital R, small r, capital Y, small y, that is round and yellow, heterozygous condition. This is the result of F1 generation. Now this offspring, what we have obtained here, they are self-cross, they are set for self-pollination or selfing. So that means
See, we are getting 4 over here. I have just mentioned 1. We will get 4 offsprings of this similar kind. So what will we see here? What we are getting? Capital R, capital small r, capital Y, small y, and that is crossed with the another type. क्योंकि F1 में जो भी offspring मिलेगा, they all will be round and yellow and heterozygous, and that has come from the law of dominance. Up we will see again the gametes are formed when we make a cross, or we see self pollination over here. So when we cross them, we get the possible combination of the gametes. So that comes out to be capital R, capital Y, capital R, small r, capital Y, small r, small y. And this will be written on one side, and this one will be written on the other side, which will result in the ratio that we obtain 9:3:3:1. This I have left for you. You can fill it yourself. And the ratio which we get here, round and yellow, that means capital R, capital Y, which we are getting, that will be 9, and there may be some difference. It may be homozygous, it may be heterozygous, but all will be counted phenotypically, because first of all, genotypic ratio is very complex, and moreover, it is not there in your course. It will never be asked. In case if it comes, you will write down the answer very complex. Don't think that there is no answer for it. But yes, when things are not there in your syllabus, not in your course, you don't need to go in for that, because I think you understand there are already so many things for you to learn. So you have to stick to phenotype ratio. Still, anyone is interested, you can drop the you can post your query. I will answer you that. Okay, next, round and green, they come out to be 3, wrinkled and yellow 3, and wrinkled and green is 1. So if you see here, round and yellow and wrinkled and green, so the most possible combination which we get, that is the parental dominant character, we get 9, and the parental recessive thing which we have taken here, if you see, round and yellow, wrinkled and green. So this was the dominant character, we get 9 over here, and this we receive here 1. Whereas there are 2 new categories which are the recombinants which are formed. Now we move further to the next example, where I have done a little elaborate form here. There was a little space problem. So just see the next example. Now the next example, I have taken plant height and flower color. So as I told you, see this law, that is law of independent assortment, the third law of Mendel. This Mendel has explained this law on the basis of dihybrid cross. And why I am saying this? Because he has considered inheritance of 2 different characters together. Simultaneously, he has taken 2 characters. What are those 2 characters? Plant height and flower color. अब इसके 2 traits होंगे. Tall, height है तो tall and dwarf, और flower color है तो purple white ले लिया. तो he has considered 2 different characters simultaneously, and that is why the dihybrid result has been calculated. Now then what happens here is that you see the parent phenotype, tall and purple, dominant will be at one side, recessive will be on one side, so we can take it as a male parent and female parent. Then the genotype, how the alleles will be represented, capital T with the different genes, capital P, and the different form of this gene, that will be the allele, small t, small p, and when they are crossed, तो पहले तो gametes बन गए इसके, capital T, capital P, small t, small p, these are the gametes which are formed out of the parents. And then what we get in F1 generation, in the previous example I told you, what will we get? All heterozygous dominant. This is what we have seen. What was the result there? Round and yellow, heterozygous. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? Tall and purple, heterozygous. And that you can see. ये capital T, capital P, if we cross it with small t, small p, क्या मिलेगा? Capital T, small t, capital P, small p. ये आ गया. तो अगर if we hide suppose this one and you see this capital T, small t, यही तो F1 में आता था law of dominance के according. तो ये
this is what we get here in F1 generation according to Mendel's first law, that is law of dominance, that only dominant characters can be expressed whereas the recessive ones they remain suppressed. ठीक है, तो ये चारों जो हमारे ऑफस्प्रिंग्स मिलेंगे दे ऑल विल हैव दिस सिमिलर काइंड ऑफ जीनोटाइप, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल P स्मॉल p, all four you can say. तो result will be of F1 generation, phenotype 100% tall and purple heterozygous condition, and genotype capital T small t, capital P small p. I hope it is clear because this question is asked in your board exam. There will be a cross which is given, then they will ask you calculate the result for F1 generation and write down the ratio or what will be the phenotype and genotype of the F1 generation, where mostly children get confused. So there is no point of confusion here because Acha, there is one more thing, children, which I have noticed, that you get confused in monohybrid and dihybrid cross. In both the crosses, there will be first filial generation and second filial generation, F1 and F2. But you have to keep this point in mind. When it is monohybrid, only one character is taken. And when it is dihybrid, there are two characters they are considered. Now, there will be a selfing or self-pollination, self-cross which is done between these two offsprings which are obtained. Now, when there will be a self-cross which is obtained, so obviously first thing will be the combination of gametes. So, the possible combination of gametes is formed here. Okay, now in case if you have any doubt how to form this, see, there is a way through which you will never get a wrong combination. What you have to do is take a checker box and on one side you write down one type of character and on the other side you will write down the gene for the other type of character. I hope I am clear. I said one type of character और उसके दोनों ट्रेट, मतलब प्लांट हाइट है तो टॉल एंड ड्वार्फ, तो एक जीन टॉल का एक आपने ड्वार्फ का लिखा. दूसरा कैरेक्टर वी हैव टेकन फ्लावर कलर, तो एक जीन आपने पर्पल का कैपिटल P यहाँ लिखा और स्मॉल p यहाँ लिखा. अब जब हम इसका कॉम्बिनेशन निकालेंगे तो ये जो चारों निकल के आएंगे दैट इज द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ गैमीट्स. अगर ये वाला प्रोसेस नहीं समझ में आता है, इसको दिमाग में यू जस्ट फिक्स इट, क्योंकि ये कभी गलत नहीं निकलेगा और इससे आपके कई सारी जो क्वेरीज हैं या क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व हो जाएंगी विदाउट एनी विदाउट टेकिंग एनी मच टाइम. So this can be solved easily. Now you see what we receive here. ये क्रॉस हुआ, कैपिटल T और कैपिटल P ये आ गया, ये देखो फर्स्ट वन. फिर कैपिटल T और स्मॉल p ये दूसरा गैमीट बन गया C here. Small t and capital P this has come here and small t small p this has come here. So ये चारों possible combination. What you have to keep in mind is कुछ भी याद नहीं रखना, सिर्फ ये याद रखना है हमारे पास डाई हाइब्रिड में दो कैरेक्टर्स है, एक है प्लांट हाइट, दूसरा है फ्लावर कलर. तो एक साइड पे ये जो चेकर बॉक्स बनाते हैं इसमें एक साइड पे एक कैरेक्टर के, मतलब और भी सिंपल लैंग्वेज अगर समझना है एंड फिक्स करना है तो ये समझ लो कि सिमिलर टाइप ऑफ अल्फाबेट लिखोगे, एक कैपिटल दूसरा स्मॉल, इससे ज़्यादा सिंपल नहीं हो सकता. ओके, एंड द अदर साइड द अदर लेटर with its uppercase and lowercase. Okay, but if you see here, इसका मतलब यही है कि हमने दोनों का possible combination gamete निकालने के लिए इस तरीके का एक तरीका है. And whatever all these four you are getting here, now you can see ये capital T और capital P, अगर हम इसका phenotype निकालें तो क्या आएगा? T से tall, P से purple. Small t और small p क्या आएगा? ये हो गया dwarf और ये क्या हो गया? पर्पल. एक कैटेगरी हो गई ड्वार्फ एंड पर्पल. कैपिटल T स्मॉल p है ना, कैपिटल T स्मॉल p ये क्या आया? टॉल एंड वाइट एंड स्मॉल t स्मॉल p दोनों ड्वार्फ एंड वाइट. अभी समझाते हैं. पहले इतनी बात समझ में आ गई कि ये हमने पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ गैमेट निकाला, ये भी एक क्वेश्चन आता है. ठीक, इसके बाद ये जो चारों हैं कैपिटल T कैपिटल P कैपिटल T स्मॉल p स्मॉल t स्मॉल p स्मॉल t कैपिटल P एंड स्मॉल t स्मॉल p, ये हम यहाँ पे एक सीक्वेंस में लिख देते हैं. ठीक, एंड देन वी फिल अप दिस चेकर बॉक्स. नाउ
दिस इज द पुनेट स्क्वायर फॉर डाइहाइब्रिड क्रॉस. अब इसके अंदर रिजल्ट आ गया, यहाँ से क्या आया, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल पी, क्या बन गया ये, टॉल एंड पर्पल. ये दूसरा कैपिटल टी कैपिटल पी स्मॉल पी, ये भी पर हेट्रोजाइगस है, डजंट मैटर, ये भी हमारा टॉल एंड पर्पल. देन कैपिटल टी स्मॉल पी कैपिटल पी स्मॉल पी, ये भी आ गया टॉल एंड पर्पल. और कैपिटल टी स्मॉल पी कैपिटल पी स्मॉल पी, तो ये भी आ गया. तो ये चारों क्या हो गए हमारे, टॉल एंड पर्पल. नाउ मूव फर्दर, कैपिटल टी कैपिटल पी स्मॉल पी, अगेन टॉल एंड पर्पल. देन ये हो गए 5. अब ये कौन सी नई कैटेगरी आ गई, कैपिटल टी स्मॉल पी, तो ये तो आ गया टॉल, और ये क्या हो गया, वाइट. दैट इज द सेकेंड कैटेगरी हियर. तो ये एक हो गया. अब फिर से आए कैपिटल टी कैपिटल पी स्मॉल पी, ये हो गया टॉल, ये हो गया पर्पल, तो उसमें ऐड हो गया 6 नंबर हो गया. फिर आगे आए कैपिटल टी, ये क्रॉस ऐसे चल रहा है, कैपिटल टी स्मॉल पी, ये क्या बना, ये कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल हो गया, स्मॉल पी वाइट हो गया, तो इसका दूसरा नंबर ऐड हो गया. फिर आगे बढ़े, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल पी, ये हो गया नंबर 7. देन कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल पी स्मॉल पी, ये हो गया नंबर 8, है ना. ये बढ़ता जा रहा है क्योंकि ये क्या रिजल्ट है, टॉल एंड पर्पल. फिर वी मूव फॉर द स्मॉल टी एंड कैपिटल पी, ये हमारी दूसरी कैटेगरी आ गई. दैट इज, ये तो हो गया डॉफ और कैपिटल पी पर्पल, तो डॉफ एंड पर्पल एक और कैटेगरी आ गई हमारे पास. फिर नंबर 2 डॉफ एंड पर्पल, ये भी वही है, स्मॉल टी डॉफ, कैपिटल पी स्मॉल पी पर्पल. ठीक, तो ये हो गया दूसरा नंबर. नाउ वी सी हियर कैपिटल टी कैपिटल पी स्मॉल पी, ये आ गया नंबर 9, जो फर्स्ट वाला कैटेगरी थी. ठीक है. देन नेक्स्ट वन टॉल एंड वाइट वी आर गेटिंग, दैट इज कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल हो गया, स्मॉल पी वाइट, तो टॉल एंड वाइट ये 3 आ गए इसके. एंड दिस इज स्मॉल टी कैपिटल पी स्मॉल पी 3 इसके हो गए, और बचा एक लास्ट में ड्वार्फ एंड वाइट. इसको वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लाइक सपोज यू फिल अप दिस बॉक्स. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अगर क्रॉस करेंगे, वी जनरली राइट कैपिटल टी कैपिटल पी. फॉर योर कन्वीनियंस इट बिकम्स वेरी ईजी टू राइट कैपिटल पहले स्मॉल बाद में, बिकॉज दैट गिव्स यू एन आइडिया एंड इट बिकम्स वेरी क्विक एंड कन्वीनियंट फॉर यू टू कैलकुलेट द रेशियो. अब ये तो I have filled here. You please do it on yourself. I have given you some examples also for your homework. And yes, I must tell you one thing. The previous examples which I have given, I will post the solution also of those questions. And in case if you feel that there is any doubt in it, please you may ask in that portion. Okay? अच्छा, तो ये समझ में आ गया पूरी बात. पहले क्या किया हमने, 2 कैरेक्टर्स लिए, डाइहाइब्रिड क्रॉस था. एक कैरेक्टर हो गया प्लांट हाइट, दूसरा कैरेक्टर हो गया फ्लावर कलर. हाइट एक कैरेक्टर है, इसके 2 डिफरेंट ट्रेड्स होंगे, टॉल एंड ड्वार्फ. फ्लावर कलर के 2 डिफरेंट ट्रेड्स हो गए, पर्पल एंड वाइट. जब हम इसको क्रॉस करते हैं F1 जनरेशन में, हमें क्या मिलता है, सारे ये टॉल एंड पर्पल. ठीक, और कैसी कंडीशन में, हेट्रोजाइगस कंडीशन में. ये है होमोजाइगस कंडीशन, कैपिटल टी कैपिटल पी. I hope this is clear in your minds that what is homozygous and heterozygous. तो अब जब ये हमको रिजल्ट मिलता है, ये हमें पता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस F1 जनरेशन में व्हाट डू वी गेट हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, यही तो मिलता है ना. तो उसके अकॉर्डिंग कैपिटल टी कैपिटल पी स्मॉल पी, ये F1 जनरेशन में हमें क्या मिल गया रिजल्ट. ये हो गया हमारा फिनोटाइप टॉल एंड पर्पल 100%, और ये हमारा हो गया जीनोटाइप, ऑल आर सेम. ठीक है, 100% कैपिटल टी कैपिटल पी स्मॉल पी टॉल एंड पर्पल. अब ये जो F1 जनरेशन है इसमें सेल्फिंग होगी. ठीक है, तो क्रॉस होने से पहले गैमीट्स बनते हैं. पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ गैमीट, आई टोल्ड यू, दे मेक अ बॉक्स, राइट डाउन एक कैरेक्टर वन साइड, अदर कैरेक्टर अदर साइड, सो दैट दे विल हेल्प यू to sort out possible combination. And when you do it this way, there will be no scope of making mistakes. ये कैसे लिखेंगे possible combination of gametes? कैपिटल T कैपिटल P कैपिटल T स्मॉल p स्मॉल t स्मॉल p स्मॉल t स्मॉल p स्मॉल t कैपिटल P, सॉरी, ओके, स्लिप ऑफ टंग, सॉरी. ओके, अब ये चारों जो है कैपिटल T कैपिटल P कैपिटल T स्मॉल p, और यहाँ सीक्वेंस में लिख दोगे. Then you will fill this box. उसके बाद try to count yourself.
Don't go, see, in any case the ratio remains the same. Dihybrid cross का जो phenotypic ratio है that is fixed. कोई भी एग्जाम्पल आ जाए, इसका आंसर हमेशा 9:3:3:1 ही निकलेगा. फिनोटाइप डाईहाइब्रिड रेशियो हमें रिमेन्स द सेम. जीनोटाइप पूछते नहीं है, आता नहीं है, सिलेबस में नहीं है. सेकेंड थिंग इज, अब इसमें ये भी आता है कि ये जो रेशियो निकाला है 9:3:3:1, ये 9 क्या है, 3 क्या है, 3 क्या है, 1 क्या है, ये भी आप यहाँ से लिख सकते हो. You don't even have to, until and unless it is asked. Actually, it is a little thing. First you draw it, you make it, then only you can understand. Otherwise, if you try to skip all this part and reach to this thing, then it will be a little confusing. So please solve this, understand, and then the last thing is that through this you can write the 4 different categories. जैसे tall and purple है, तो ये capital T और capital P, tall and purple. दूसरा कैटेगरी क्या आई थी, tall and white, तो ये T tall हो गया, small p white हो गया, tall and white. तीसरा कैटेगरी क्या है, dwarf, small t dwarf, capital P purple, dwarf and purple. ठीक, तो ये 9 हो गया, ये दोनों 3 और ये हो गया 1, small t small p. तो अगर इतनी चीज आ गई बनानी, गैमीट्स बनाने आ गए, तो यू कैन राइट डाउन द फिनोटाइप का कैटेगरी ऑल्सो एंड द रेशियो ऑल्सो. ये हमेशा 9 रहता है, सबसे ज्यादा जो डोमिनेंट है. रेसेसिव वाला बेचारा एक रेसेसिव सा है, चुपचाप नंबर 1 लेके पड़ा रहता है नंबर, और बाकी के ये 2 जो हैं वो 3. तो 9:3:3:1. आई होप this is clear because it is very important for you to understand the thing. Please children, don't get confused, because in the previous classes, like the classes which have passed out, I'm just sharing this my experience that children they get confused in जैसे question आया, तो question में लिखा है calculate the F2 ratio, write down, give the phenotypic ratio of F2 generation. तो बच्चे सोचते हैं F2 का मतलब ये है कि लिख दो 9:3:3. अरे देखो तो भैया, रॉ मटेरियल क्या मिला है, एक है मोनोहाइब्रिड क्रॉस है कि डाईहाइब्रिड क्रॉस है, एक कैरेक्टर दिया है कि 2 कैरेक्टर्स दिए, एंड एवरीथिंग इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन. यू कैन कंपेयर द क्वेश्चंस ऑल्सो, एंड I hope I have made myself very clear. Now there are some questions which I have formed for you, so I will tell you. See, this is example 3 which you will do it yourself. Flower position and seed color, समझ में आ रहा है ना, 2 कैरेक्टर्स हैं, इसके 2 ट्रेट्स हो गए. फ्लावर पोजीशन का एक्सियल टर्मिनल, सीड कलर का येलो एंड ग्रीन. अब हम इसके डिफरेंट जीन्स देखते हैं. तो कैपिटल ए डोमिनेंट है ना, ये एक्सियल, और येलो भी डोमिनेंट है. ये इससे कंफ्यूज मत करना, ये ट्रेट है, लेकिन डोमिनेंट एक तरफ रहता है, दूसरी तरफ रेसेसिव रहता है. ठीक है ना, डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद दिस थिंग. तो डोमिनेंट एक्सियल यहाँ से आ गया, येलो ये, और ये हो गया टर्मिनल और ग्रीन यहाँ से. इसके जीन्स क्या हो गए, कैपिटल ए कैपिटल वाई और कैपिटल ए कैपिटल वाई. ये हो गया स्मॉल ए स्मॉल वाई एंड स्मॉल ए स्मॉल वाई. यहाँ तक तो आई हैव डन, रेस्ट यू विल सॉल्व. नेक्स्ट क्वेश्चन विच यू विल डू इज अ पी प्लांट हैविंग axillary flowers and round seeds. It is different, not this one. इसको पूरा calculate करना F2 तक, ठीक है. Is crossed with the pea plant having terminal flowers and wrinkled seeds. Give the genotype of both the parents. अब देखो ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना, कि ये तो आपको रॉ मटेरियल मिल गया, ठीक है. बेस्ट वे इज यू राइट हियर ऑन द साइड कि क्या क्या है हमारे पास. पी प्लांट है जिसके पास एक्सिलरी फ्लावर है, तो कैपिटल ए, राउंड सीड्स हैं कैपिटल आर. इस क्रॉस्ड, किससे क्रॉस कर रहे हैं, दूसरी कैटेगरी से. तो एक्सिलरी का टर्मिनल हो गया, ऊपर ही लिखा हुआ है, दैट इज व्हाई आई हैव नॉट मेंशन्ड हियर कि ये रेसेसिव है. स्मॉल ए और यहाँ पे रिंकल्ड हो गया आपका रेसेसिव कैरेक्टर, तो ये हो गया स्मॉल आर. तो जीनोटाइप देना. आई थिंक आई हैव मेड द कंसेप्ट क्लियर. यू कैन राइट डाउन व्हाट विल बी द जीनोटाइप. दिस, not this one, you will write down differently for this. Second is give the genotype and phenotype of F1 generation. क्रॉस करोगे अपने आप आ जाएगा, नहीं आता है प्लीज लेट मी नो. Give the phenotypic ratio of F2 generation.
ठीक है, but please calculate and write down. Don't only simply, once at least you do. Later on, so obviously when you will get the question paper, so you will not have that much time, but at least एक बार करके देखो please इसको, है ना. You will have to draw that, because sometimes they may ask you to draw the entire cross also. Sometimes it comes, of course not necessary. They ask you to draw the dihybrid cross, पूरा checkerboard they ask, so you should know how to do it. Name the different types of gametes formed by F1 generation. I told you in the previous slide that how the gamete combination can be made. Name the law that is depicted by the above cross and define it. So you know which law is it. Sometimes they ask which cross is shown. So that also, and you define the cross. All right, children. Now next we will continue with the sex determination in human beings in the next video. Thank you. I hope till here it was clear to you all.